So block 4. Good evening to all learners. Good evening to all learners. Good evening, sir. Good evening, sir. Proceed, Good evening, sir. proceed to discuss and enter into block 4. That is rural basic services and infrastructure. Rural basic मौलिक सेवा एवं infrastructure. एगुड़िक आमर ग्रामांचल पाई अति अपरिहार्य मौलिक सेवा सेवा भितर कहले कौन ना मुख्य बुझेबा जे लिटरेसी एजुकेशन फॉर ऑल ये होची गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र रे मुख्य उपादान एजुकेशन फॉर ऑल तापर आउ कोन रही पारे बेसिक सर्विसेज रूरल हेल्थ केयर रूरल हाउसिंग रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस ये सब होची हमर बेसिक सर्विस रे जाउची रूरल कनेक्टिविटी रोड so these are the items included in the rural basic services and that is the infrastructure facilities हमें चाषबास विभिन्न प्रकार प्रोग्राम प्रोजेक्ट इत्यादि कथरे आलोचना कले so simultaneously the rural development also resides upon the basic services and infrastructural facilities. Hence we know India is a democratic form of government गणतांत्रिक राष्ट्र आम भारत वर्ष तेणु एजुकेशन is one of the important element or basic necessity for all the citizens. Education is the backbone of a democracy. गणतंत्र हेउची गोटे शिक्षा होची गोटे गणतंत्र राष्ट्र मेरुदंड भली जदि मनुष्यर मेरुदंड जदि भल थिबो ठीक स्ट्रांग थिबो ताहले आम स्वास्थ्य आम शरीर मध्य ठीक स्ट्रांग थिबो सो दैट इज व्हाई शिक्षा गोटे देशर जे कोनसी देश होना काहेकि शिक्षा होची मूल उपादान शिक्षा द्वारा ह्यूमन रिसोर्सेस क्वालिटेटिव ह्यूमन रिसोर्सेस we can produce in the country. So जदि qualitative human resources prevail कला ताहले the social structure, political structure, economic structure and scientific structure everything will gradually become qualitative, turn to qualitative. So that elementary education and a total literacy campaign will give you a broad idea about the conceptual of elementary education and hence the national educational policy. Two important national educational policy was imparted in our or launched in our country that during 1968 another is one 1986 दुईटा हमर मुख्य जते माने लॉन्च करिछि हमर एजुकेशनल पॉलिसी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी ता भितर ए दुईटा होचे मुख्य 1968 एवं 1986 प्राय परीक्षा रे लॉन्ग क्वेश्चन ता आसे 1986 मन रखिदिबो 1986 ता प्राय लॉन्ग क्वेश्चन परीक्षा रे आसी थाए सो हियर universalization of elementary education accepted as a national goal since 1950 1950 मसिया पाखरु हमर समस्तंकर टार्गेट थिला बा जातीय स्तर रे जातीय लीडर माने समस्त यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन पाई समस्त चेष्टा करिथिले काहे कि ना संविधान प्रणयन हला परे डॉक्टर बी आर अंबेडकर जे संविधान प्रणयन करथिले सो वन ऑफ द इंपोर्टेंट as phases added in Indian Constitution like directive principle of state policy. Constitution India envisaged a provision for free and compulsory education to all children up to age of 14 years. Directive principle state policy ओडिया रे कहा जाय राष्ट्र निर्देशावली नियम हमर जो चतुर्थ स्तंभ रे ऐड करा जाय संविधान रे 14 वर्ष पर्यंत फ्री मागणा रे एजुकेशन शिक्षा संभव पिला मानकु दिया जिवो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड इन डिसेंबर
2002 again to include free and compulsory education of all the children from 6 years to 14 years as a fundamental right. आमर जो फंडामेंटल राइट्स अच्छी मौलिक अधिकार अच्छी आमर ता भितर ये गोटे राइट 6 रु 14 वर्ष पर्यंत मागणार एजुकेशन while expanding the provision for children up to age 6 to include early childhood care and education with the directive principle of state policy. Hence, national policy on education defines universal elementary education in a broad framework, changing the emphasis from enrollment and relation to enrollment, retention, and achieve 100% success. So, elementary education is very important as aspect for the Indian democratic form of government. So, landmarks in education policy. On some landmark thila. So, the national policy on education 1968 ki dekhiba tige a marked 1968 educational policy marked a significant step in the history education in independent India. It aimed at promoting national progress, a sense of common citizenship and culture, and at strengthening national integration. जातीय ऐक्य बोधता हासिल करिबा पई एवं एही 1968 शिक्षा पद्धति सारा भारत रे प्रचलन करागला. It states the need for a radical reconstruction of the education system and improvement in quality at all stages, and gave much greater attention to science and technology and the cultivation of moral values. विज्ञान एवं वैषयिक ज्ञान उपरे गुरुत्व दे एवं कल्टिवेशन ऑफ मोरल वैल्यूज मानसिक मूल्यबोध को सुदृढ़ करिबा पई एवं ताको गुणात्मक करिबा पई प्रथम आरंभ होला 1968 रे national policy on education. So here more than 90% of the country rural population has schooling facility within a radius of 1 kilometer group nowadays, and acceptance of the common structure of education throughout the country and the education introduction 10 plus 2 plus 3 system by most states adopted 10 plus 2 plus 3 system education policy. किंतु आम ओडिशा रे ताहा बहु विलंब रे लागू हला 10 plus 2 plus 3 ता पूर्वरु सबु स्टेट प्राय अडॉप्ट करिथिले जे 10 plus 2 plus 3 हमर एखाटी कोन हेछि कॉलेज लेवल ले कंपोजिट सब रहि गला +2 +3 गोटिए कॉलेज रे चलला तार शिक्षा व्यवस्था सरकार प्रति वर्ष शिक्षा व्यवस्था को So national policy on education, the process of formulation 1986 as provides you the achievement of, and that will focus us for the long question. So policy on 86 was unique in many aspects. It was perhaps the first time that a process was adopted, initiated through the preparation of documented entitled Challenge of Education, which gave detailed baseline or diagnosis of the problem faced by the different sectors of the education. The parliament discussed and adopted the National Policy on Education 1986 during the budget session of 1986. A promise was made by the Ministry of Human Resources, प्रतिज्ञाबद्ध करा जायथिला
resources development, that he would present a program of action for the implementation of a policy. So major thrusts of national policy and education 1986 रे कौन थिला? The concept of a national system of education implies that up to a given level, all students, irrespective of caste, creed, location, or sex, have access to education for a comparable quality. गोटे निर्दिष्ट सबु वर्गर लोक जाति वर्ण निर्विशेष समस्त को गोटे निर्दिष्ट शिक्षा गुणात्मक शिक्षा देश में प्रचलन होगापाई आमर 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मूल उद्देश्य थिला. So the national system of education envisaged a common educational structure. The 10+2+3 structure has now been accepted in all parts of the country. Regarding the further breakup, the first 10 years efforts should be made to move towards in the elementary system comprising 5 years primary education and 3 years of upper primary education, followed by 2 years of high school education. So that ताकू कहुए सरकारिया कमिशन जोटा आमर बसी थिला 1986 रे सरकारिया कमिशन माध्यम रे 10+2+3 न्यू एजुकेशनल नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी अडॉप्टेड किंतु सारा भारत रे ताकू एक्सेप्ट करले अडॉप्ट करले किंतु ओडिसा रे सेटा कार्यकारी हेई पाइला नाही. एई 2-3 वर्ष अब सरकारनकर कड़ा निर्देश फल रे ताकू वर्तमान +2+3 को अलगा कर दिया गला. तथापि ए पर्यंत अनेक जगह रे जानि थाओ लर्नर्स माने पिला माने तमे सब जानि थाओ ए पर्यंत मध्य अनेक कॉलेज रे +2+3 एकाठी कंपोजिटली चली हैं दीर्घ माने केते 83-86 मसिया आडू एटा इंप्लीमेंट करा गलानी. 86 रे 10+2+3 अडॉप्ट करा गलानी किंतु कार्यक्रम सारा भारत रे ओडिसा रे पारि नहीं. Due to lack of political willingness and consciousness, awareness among the political leaders and bureaucrats, so that we are in a hazardous position. ए पर्यंत मध्य अनेक कॉलेज देखे बटे +2+3 एकाठी गोटे जगह रे चली किंतु सेटा एक्चुअली अडॉप्ट होवा कथा 10+2 दशम सहित एकादश द्वादश होवा कथा जेमति इंग्लिश मीडियम रे चली किंतु हमर ओडिसा रे ए पर्यंत संपूर्ण भाव रे भी कार्यकारी हेई पारि नाही. सो एजुकेशन फॉर क्वालिटी शिक्षा पई आधारे प्रणयन करा जायतला. द न्यू पॉलिसी लेड स्पेशल एम्फासिस ऑन द रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज एंड टू इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी by attending to the specific needs of those who have been denied quality so far. The national education system would play a positive and interventionist role in the empowerment of women. सबु महिला माने मध्य शिक्षा आदरु हासिल करिवे. सो ताधरे रहिला making the system a better deal for teachers with greater accountability on their part. The provision of improved student services and insistence on the observance of acceptance norms of behavior and the provision of a better facilities to institutions. प्रत्येक शिक्षा अनुष्ठान गुडी को विभिन्न प्रकार स्पोर्ट्स हो अन्य वोकेशनल एजुकेशन हो अन्य क्वालिटेटिव सब्जेक्ट गुडी को देई पिला मानकू स्वावलंबनशीलता हासिल करया पे मध्य शिक्षा रे व्यवस्था करा जायतिला. The creation of system of performance appraisal for institution according to the standards of and the norms of education quality at the national and state level. So management किभली करा गला 1986 education policy रे evolving a long term planning and management perspective for education and its integration with the country development and manpower needs. भल गुणात्मक मैनपावर आवश्यकता अनुसार ताको लॉन्ग टर्म प्लानिंग एवं ता परिचालना के भली करा जिवो आधरे ए व्यवस्था रे मैनेजमेंट करा गला. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटीज एंड क्रिएशन ऑफ स्पिरिट ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ताको विकेंद्रीकरण मध्य करा गला.
सेंट्रल लेवल टू स्टेट लेवल पर्यंत giving preeminence to people involvement including association of non-governmental agency and voluntary effort, inducting more women in planning and management in this new educational policy and other action सब national program of आज action कौन सब निया गला the task force the human resource development by HRD promised that in the monsoon session that he would present a program action for the implementation of the policy. Immediately after the budget session, the Ministry of HRD, Human Resource Development, undertook an intensive exercise to prepare promised program of action. Program of action नियागला task force माध्यमरे 23 task force were constituted. काकु ना 1986 मसीहा शिक्षा व्यवस्था को पूरा प्लान्ड वे मैनेजमेंट करा गला स्ट्रांग स्टेप निया गला and each was assigned a specific subject covered by the national policy on education. Eminent educationists, experts and senior representative of the central and the state government were associated with the task force. जो टास्क फोर्स टी गठन करा गला एमिनेट शिक्षाविद मान को रखा गला भल एक्सपर्ट मान को स्पेशलिस्ट मान को रखा गला सीनियर रिप्रेजेंटेटिव मान को केंद्र एवं राज्य तरफ मध्य ताधरे सब मेंबर करा गला टास्क फोर्स रे आधरे कौन थिला द सब्जेक्ट असाइन्ड टू द टास्क फोर्स यार कौन थिला सब्जेक्ट सब ए टास्क फोर्स रो कार्यक्रम कौन सब सब्जेक्ट थिला ए जो नुवा एजुकेशनल पॉलिसी पाई मेकिंग द सिस्टम वर्क ए जो नुवा एजुकेशनल पॉलिसी परफेक्टली कि भली सिस्टम प्लेटफॉर्म भल भाव में कार्यक्षम हो पारिबो तापर गुरुत्व देथिले प्रोसेस ऑफ स्कूल एजुकेशन एजुकेशन फॉर वुमेन क्वालिटी एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास माइनॉरिटी एजुकेशन एजुकेशन फॉर हैंडीकैप ऑडिट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एलिमेंटरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन नवोदय विद्यालय वोकेशनल एजुकेशन हायर एजुकेशन ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन जोटा कि हमर ओपन यूनिवर्सिटी इंदिरा इग्नो जोटा हम पाठ पढुचंती तापर मध्य गुरुत्व दे जायतिला टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट द कल्चरल पर्सपेक्टिव स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन इवैल्यूएशन प्रोसेस सब गुडाक एई नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 रे सबु ए टास्क फोर्स माध्यम रे सबु करा गला सो एजुकेशन फॉर ऑल समस्तंग पई शिक्षा व्यवस्था पई आमे आ गोटे जानले EPEFA एजुकेशन फॉर ऑल दैट इज इंक्लूडेड इन सर्व शिक्षा अभियान एसएसए जोड़ा सर्व शिक्षा अभियान आम देश मध्य चलिला सो नेशनल लिटरेसी मिशन जोटा कि established in 1988 national literacy mission 1928 मसीह रे स्थापना करा गला with the objective to achieve 75% literacy by 2005 2005 सुधा 75 भाग लिटरेसी आम देश रे क्रिएट करिवा seek to achieve this goal by imparting functional literacy to the literate in the age group of 15 to 35 years 15 रु 35 वर्ष मध्य रे पिला माननकु मिनिमम 75% लिटरेसी रेट में अचीवमेंट करिवा ऑब्जेक्टिव थिला सो बेसिक ऑब्जेक्टिव अगेन ऑन नेशनल लिटरेसी मिशन इज टू मेक लिटरेसी ए फंडामेंटल एट्रिब्यूट फॉर एवरीवन इन द कंट्री स्पेशली वुमेन महिला मानकर शिक्षा को मध्य वृद्धि करेबा तापर एथरे व्यवस्था थिला कोन ना नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट पिला मानक पई डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जोटा कि डीपीईपी को आ जाउची डीपीईपी ता मध्य इंक्लूड कराइतला 1986 पॉलिसी रे सो एसएसए जोटा अछि सर्व शिक्षा अभियान एलिमेंटरी एजुकेशन दैट इज नेशनल मिशन फॉर एलिमेंटरी एजुकेशन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ड्यूरिंग 1998 resolved to pursue a holistic convergent approach for achieving the goal of universal elementary education following mission mode operation
गोटा मिशन मोड ऑपरेशन जेबली मंगलायन मिशन टार्गेट फिक्स करा जाय था चंद्रायन टार्गेट मिशन फिक्स करा जाय था सेही भली नेशनल मिशन फॉर एलिमेंटरी एजुकेशन आमर सर्व शिक्षा अभियान माध्यम रे गुरुत्व आरोप करा जायथिला सो द एसएसए बा सर्व शिक्षा अभियान द फर्स्ट नेशनल प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सल एजुकेशन and has been formulated on the basis of recommendation of this committee. The SSA India for the first time is attempting to translate its commitment into a program to achieve 100% success, which provides a greater democratic participation and community involvement, decentralized planning and management with a view of specific requirements and needs of the disadvantaged region, social group, girls and the children in difficult circumstances. এই ସବୁ ମାନେ छोट छोट पिला गणतांत्रिक पद्धति रे एवं कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट विभिन्न प्रकार कम्युनिटी आधार इन्वॉल्वमेंट है इभली सक्सेस 100% अचीव करबा तेणु सर्व शिक्षा अभियान ऊपर गुरुत्व दिया जायतिला देइतले सरकार ड्यूरिंग 1998 the सर्व शिक्षा अभियान the flagship program for achieving the goals of the education envisages the use of mainstream management structure at the national level. However, a separate department elementary education and literacy has been created in order to focus efforts and activities provide framework for attaining 75% sustainable literacy. केंद्र स्तर मध्य मिनिस्ट्री क्रिएशन करागला by which 100% माने एलिमेंटरी एजुकेशन सक्सेसफुल अचीव करिया पे चेष्टा करागला सो दैट इज व्हाई एएसएस रा ऑब्जेक्टिव गुडी का कोन सब थिला लाइक टू हैव ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल सब पिला माने स्कूल को जाइथिबे सेंटर एंड अल्टरनेटिव स्कूल बैक टू स्कूल कैंप बाय 2003 जेते पिला स्कूल त्याग करथिबे समान 2003 सुधा समान समस्त अछि विद्यालय रे सबु पिला माने पाठ पढिबे टू हैव ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट 5 इयर्स ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग बाय 2007 प्राइमरी स्कूलिंग समान 2007 मसिया सुधा सबु पिला माने अचीवमेंट करथिबे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव थिला एसएस रा बा सर्व शिक्षा अभियान कोन टू हैव ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट 8 इयर्स of schooling by 2010 2010 सुधा मध्य 8 वर्ष पिला माने तांकर लेवल ले सब शिक्षा कंप्लीट करथिबे टू प्रोवाइड एलिमेंटरी एजुकेशन सैटिस्फैक्टरी क्वालिटी विथ एम्फासिस ऑन एजुकेशन फॉर लाइफ क्वालिटेटिव एजुकेशन मध्य आपरे गुरुत्व दिया जायतिला नेक्स्ट टू इफेक्ट यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2010 सब पिला माने जो माने विद्यालय को जाई पारु नथिले छोट पिला शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वुमेन जो माने अबलित बा डिस्टिट्यूट दे विल बी मोटिवेटेड टू गो टू स्कूल सो आधार थिला कोन स्ट्रेटजी सेंट्रल टू सर्व शिक्षा अभियान कोन सब कौशल आधार अप्लाई करा जायतला ना इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कम्युनिटी एम्पावरमेंट इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग ये सब गुरुत्व दिया फोकस ऑन दी एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड आधार सब मध्य गुरुत्व दिया शिक्षा व्यवस्था ये सब थिला हमर जे एजुकेशन फॉर ऑल एंड दैट प्रोवाइड दी sufficient awareness create sufficient awareness in the rural area but the rules and regulation formulated by the central government. So second unit we proceed to discuss the rural housing. What are the items and aspects included in rural housing? बासगृह जोगे देबा केंद्र सरकार मध्य गोटे अति गुरुत्वपूर्ण दायित्व कारण आम देश रे अनेक लोक अछंती जे अनेक नागरिक अछन जो माने खाद्य वस्त्र बासगृह बिना से माने विचरण करछंती सही भली जे बेसिक नेसेसिटी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बेसिक नेसेसिटी फॉर देयर लाइफ दे आर इन ग्रीफ डिस्पेयर एंड पेन तो मौलिक आवश्यकता से मानकर नथिबारु अनेक लोक अछंती जो माने की नैराश्य हताश जंत्रणा रे जीवन यापन करूछंती सो इंदिरा आवास योजना ता मध्य गोटे थिला
IAY प्रोग्राम तक आ जाए शॉर्ट फॉर्म रे IAY और इंदिरा आवास योजना. So history of IAY may be traced back to the program of rural employment which are initiated during early 1980. Construction of houses was one of the activities taken up under the National Rural Employment Program NRP program under रे इंदिरा आवास योजना प्रोग्राम कार्यकारी करागला which was launched during 1980 and the rural landless employment guarantee program जोटा RLAGP थिला which began during 1983. This was however no uniform policy for rural housing at the state level. It was only during 1985 that rural housing received special emphasis when a part of the RLAGP funds was set aside for the construction of houses. ଯେତେବେଳେ RLGP କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ରୁରାଲ ହାଉସିଂ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା. ସୋ ଆଧରେ କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଥିଲା IAY ପ୍ରୋଗ୍ରାମର? ଦି ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଦି IAY ବା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ଇଜ ଟୁ ହେଲ୍ପ construction upgradation of dwelling units of the members. କାହାର କୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଆମର ନୂଆ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଯୋଉଗୁଡାକ ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ତୁଟକା ତାକୁ ରିଭାଇଭ କରିବା, ରିନୋଭେସନ କରାଇବା. କୋଉମାନଙ୍କର ନା ଶିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ, ଶିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ ପିପୁଲସ ଟୁ ଫ୍ରିଡ ବଣ୍ଡେଡ ଲେବରର୍ସ ଇନ ରୁରାଲ ଏରିଆଜ. ଗତି ଶ୍ରମିକ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା. ସୋ ଦ ଟାର୍ଗେଟ ଗ୍ରୁପ କୋଉମାନେ ସବୁ ଆଧାର ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଉଥିଲେ? ଦି ରିସାଇଡିଂ ଇନ ରୁରାଲ ଏରିଆଜ. ଲୋକଟି ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବ, ବି ହାଉସଲେସ୍ ଅର୍ ଇନ୍ ନିଡ୍ ଫର୍ ସେଲ୍ଟର ଅଫ୍ ଅପଗ୍ରେଡେସନ. ବାସଗୃହ ନଥିବ କିମ୍ବା ଯୋଉ ବାସଗୃହ ଥିବ ତାକୁ ଅପଗ୍ରେଡେସନ କରାଯିବ ବା ରିନୋଭେସନ କରାଯିବ. ଯୋଉଟା କି ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ଘର ଥିବ ତାକୁ ଆଉଥରେ ରିନୋଭେସନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା. ନଟ୍ ବି କଭର୍ଡ ବାଇ ଏନି ଅଦର ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ହାଉସିଂ. ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହାଉସିଂ ସ୍କିମରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବ. ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଧରେ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଥିଲା. ସୋ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଅଫ ବେନିଫିସିଆରିଜ୍ କୋଉମାନେ କରିବେ? ସେଇ DRDA ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଆଟ୍ ଦି ବ୍ଲକ ଲେଭୁଲ, ଲାଷ୍ଟରେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭୁଲ ଆଟ୍ ଦି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ. ସୋ ଦ ଡିସିସନ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଆଲୋକେସନ ମେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାର୍ଗେଟ ଫିକ୍ସଡ. ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିକି ଯିବ, ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ତାକୁ ଇନିସିଏସନ ନେବେ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭୁଲରେ ତାହା ସ୍ଥିର କରାଯିବ. ସୋ ସେହି ଅନୁସାରେ the beneficiary will be selected. The first priority of the selection beneficiary goes to freed bonded labor ମାନଙ୍କୁ, and secondly priority is given to scheduled caste and scheduled tribe ଲୋକମାନଙ୍କୁ. The third priority ଆଧାରରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା families of widows. ୱିଡୋ ମାନଙ୍କୁ, ବିଧବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଉଥିଲା. Next priority list come from the physically and mentally disabled person. ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଧାରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଉଥିଲା. Next priority goes on to ex-servicemen, retired persons of the paramilitary forces. ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଧାରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଉଥିଲା. So location and design of the IAY. ତାପରେ ଆଧରେ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା? ୟୁଜ ଅଫ ଲୋକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲୋ କଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସ୍ମୋକ୍ ଫ୍ରି ଚୁଲା ଏ ବାସଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା. ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ସାନିଟେସନ, ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ବେନିଫିସିଆରିଜ୍, ବ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ସ. କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ କଲେ ଘର ଗୁଡାକୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ କରିକି ବା କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ସେମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିନଥାନ୍ତି. ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବିଦା କରାଗଲା. ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରାଯାଉଥିଲା. ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ମାନେ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଏଗୁଡାକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଥିଲା. ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦି ଭଲଣ୍ଟିୟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ କରୁଥିଲେ. ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ପରିବେଶ ଆଧରୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା. ସୋ ଆଧରେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଥିଲା, ସ୍ୱଚ୍ଛ. ଭିଲେଜ ଲେବୁଲରେ ତାଧରେ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ ପିପୁଲ ବିଲୋ ଦି ପଭର୍ଟି ଲାଇନ, ଭିଲେଜ ଲେବୁଲରେ ଯୋଉମାନେ କି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ବସବାସ କରୁଥିବେ. ଲିଷ୍ଟ ଅଫ ଡିଜାଷ୍ଟର resistance construction features, list of beneficiaries during the preceding year,
funds allocated IAY for the village, IAY guidelines, village स्तर रे एगुड़िक सब ऊपर फोकस करा जाउथला से भली ब्लॉक लेवल ले डिस्ट्रिक्ट लेवल ले एंड एगुड़िक सब करा जाय कि से मानको सब विभिन्न प्रकार सुविधा दिया जाउथला हां तापरे नेक्स्ट हमर थिला प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण आवास जोटा कहा जाए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना बा ग्रामीण आवास the government of India introduced a comprehensive scheme called Pradhan Mantri Gramodoya Yojana by PMGY short form कहा जाए PMGY with the objective of achieving sustainable human development at the village level. Since shelter is a part of sustainable human development, a special component of PMGY, namely Gramin Awas, addresses the problem of rural shelter specifically. गाँ गंडा अंचल रे ग्राम आवास जोगई दबा आदरे मुख्य उद्देश्य थिला प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना बा ग्रामीण आवास तक कहा जाउथला आर ऑब्जेक्टिव मेनली कोन थिला द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द PMGY इज टू reduce the shortage of houses for families living below the poverty line in the rural areas. shortage जो मानकर अछि जो गाँगंडा अंचल रे दारिद्र्य सीमा रेखा तले बसवास करथवा लोक मानकर यदि अधिका सदस्य थिबे मेंबर परिवार रे तांकर यदि बासगृह शॉर्टेज होथिबो ताजे आदरे से माने साहाय्य पाई थांती द मेन टारगेट ग्रुप ग्रामीण आवास कंपोनेंट्स आर द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स द फ्रीड बॉन्डेड लेबर्स एंड नॉन शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब पुअर पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन द रूरल एरिया एससी एसटी व्यतीत जो माने मध्य दारिद्र्य जनरल कास्ट हो बा अन्य कास्ट हो जो माने दारिद्र्य सीमा रेखा तले बसवास करछन्ती सेमानक प्रति ए आईएवाई बा ग्रामीण आवास योजना आधार सब गुरुत्व दिया जाउथि सो द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कोमन सु आइडेंटिफाई करूथिले सेही डीआरडीए डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी बा जिला परिषद द एबव डिसीजन डीआरडीए जिला परिषद इज कन्वेड टू द ग्राम पंचायत से भली माने ग्राम पंचायत रे फाइनलाइज होतला जे को माने एक्चुअली पाई परिबे ताकू जिला परिषद रु ब्लॉक को पठा होतला ब्लॉक रु ग्राम पंचायत को जाउतला एवं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इंटरेस्ट मध्य फीमेल मेंबर मानको मध्य बेनिफिशियरी भाबरे आधरे इनक्लूड करा जाउतला द पुअर विडो वुमेन मानको मध्य सो फंक्शन ऑफ द ग्रामीण आवास कंपोनेंट ऑफ PMGY लाइक द अपग्रेडिंग द कच्चा हाउसेस जोड़ा चाଳ छपर घर थिला ताकू अपग्रेड करा जाउथिला रिनोवेशन माध्यम रे एवं यूज ऑफ लोकल मटेरियल्स एंड लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी व्यवहार करा जाउथिला सेही लोकल आंचलिक जो कंचा माल गुडी को मिलथला से गुडी को व्यवहार करा जाउथिला प्रोविजन ऑफ स्मोक फ्री चूल्हा एंड सैनिटरी लैट्रिन्स एगडा मध्य जोगे दिया जाउथिला इन्वॉल्वमेंट ऑफ बेनिफिशियरीज जो माने आ द्वारा बेनिफिट पाउथले समान को मध्य आधरे इन्वॉल्वमेंट करा जाउथिला ग्रामीण आवास कंपोनेंट ऑफ PMGY implemented by the committee like secretary rural development additional secretary financial advisor advisor rural development planning commission joint secretary rural housing director in charge of ग्रामीण आवास एमान सबु मेंबर सबु आधरे सब थिले सो आधारे एमान सबु मॉनिटरिंग करूथिले इवैल्यूएशन करूथिले एवं लोक माने प्रकृत रे कैसे बेनिफिट पाउथि के प्रकृत रे पाइले के न पाइले इत्यादि ए सब होछि ग्रामीण आवास इत्यादि व्यवस्था थिला इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग रूरल हाउसिंग ऊपर नेक्स्ट रे अछि हमर रूरल हेल्थ केयर हेल्थ इज वेल्थ हम जानि छ ग्रामांचल स्वास्थ्य व्यवस्था यदि भलो स्वास्थ्य थिबो सो पिलाटी मानसिक स्तर रे से उत्तम शिक्षा हासिल कर परिबो गुणात्मक शिक्षा हासिल कर परिबो रुगुण स्वास्थ्य थिबा पिला बा व्यक्ति टिए कस्मिनी काले मेंटली से स्ट्रांग नथिबो मेंटली मध्ये वीक थिबो सो आफ्टर स्टडीइंग रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर decades economists and social scientists have now come to consensus health forms of an important index of human development
शिक्षा स्वास्थ्य उभय होउची आम देशर गोटे अति गुरुत्वपूर्ण विभाग किंतु नेग्लेक्ट करा जाइछि आम देश रे जोटा कि सरकार बारंबार कहउचंती दिस हेल्थ एंड एजुकेशन इज नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी किंतु वास्तव रे हेल्थ एंड एजुकेशन शिक्षा स्वास्थ्य होउची मूल पिंड भल क्वालिटेटिव एजुकेशन भल उत्तम स्वास्थ्य ये दुईटा ही गोटे देशर मॉडर्नाइजेशन करिबारे डेवलपमेंट करिबारे मुख्य उपादान अटे कारण जिते डेवलप कंट्री आमे जदि फोकस करिबा जर्मन फ्रांस इटाली यूनाइटेड स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया जापान ये शिक्षा स्वास्थ्य ही तांको माने पृथ्वी रे आगे नहीं शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था गुणात्मक शिक्षा एवं उत्तम स्वास्थ्य किंतु आम देश रे तार अपोजिट प्रथमे प्रायोरिटी दिया जाए जर्मन गोटा देश शिक्षा पर फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाए क्वालिटेटिव टीचर माने जो माने हायर जो माने भल क्वालिटेटिव ह्यूमन रिसोर्सेस फर्स्ट गिवन प्रायोरिटी ऑन एजुकेशन शिक्षा रे जो माने अति मेधावी संपन्न छात्र छात्री मानकू बा शिक्षाविद मानकू शिक्षा रे तांको नियुक्ति दिया जाय थाए मेधावी छात्र छात्री मानकू शिक्षा रे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाए जर्मन रे तेणु जर्मनी साइंटिफिकली सो एडवांस्ड मॉडर्नाइज्ड एंड डेवलप्ड कंट्री पे को जाय जर्मन गोटा देश अति मेधावी पिला मानकू शिक्षा रे इन्वॉल्वमेंट करा जाय थाए किंतु आम देश रे अपोजिट मेधावी मानकू बेसी प्रायोरिटी दिया जाउची ब्यूरोक्रेट्स एडमिनिस्ट्रेशन सो जहाँ अब जानिच ब्यूरोक्रेट्स माने अति मेधावी हेले जहाँ अब देश जिमि चलीची बा राज्य जिमि चलीची जानिथो सो हेल्थ डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फॉर्मिटी सो सबु क्षेत्र में शिक्षा होची प्रत्येक मूलपिंड जहाँ कि आम स्वास्थ्यर सबु को परिवर्तन करी थाए मेंटली मध्य स्ट्रांग करी थाए द हेल्थ पिक्चर ऑफ आवर कंट्री is far from satisfactory the vision of health for all रखा जाइथिला से समय रे 2000 बेलकू समस्त उत्तम शिक्षा हासिल करिवे बोली मैटेरियलाइज करा जाइथिला द सिचुएशन इन रूरल एरियाज इन इंडिया वेयर ओवर 2/3 of our population lives in is worse conditions nowadays so far ए पर्यंत मध्य माने बहु 2/3 पॉपुलेशन पर्सन जो माने कि उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था पाई पारि नहंती सो पॉवर्टी एंड हेल्थ सो पॉवर्टी आउ हेल्थ परस्पर गोटे मुद्रार उभय पार्श्व भली सो लो प्रोडक्टिविटी और पॉवर्टी लीड्स टू पॉवर्टी जदि थिबो गोटा देश रे दैट लीड्स टू वीक हेल्थ दारिद्र्य जदि गोटा देश रे अछि दैट लीड्स टू वीक हेल्थ रुग्ण स्वास्थ्य रहिबो गोटे पिला न्यूट्रिशन विटामिन्स पाइला नाही काहे कि तार फैमिली पॉवर्टी रे विशियस सर्कल बा दारिद्र्य कराल चक्र रे घांटी होउची सो पॉवर्टी लीड्स टू वीक हेल्थ रुग्ण स्वास्थ्य जदि दारिद्र्य अछि गोटा परिवार रे पिला माने मध्य रुग्ण स्वास्थ्य नेकरी बढ़िबे एवं इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन पुअर सैनिटरी कंडीशन क्राइम वायलेंस ड्रग अब्यूज ए गुडिक मध्य परिवार रे देखा जिवो सो दैट लीड्स टू सिकनेस पुअर हेल्थ ऑटोमेटिकली पुअर हेल्थ हबो दैट लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी सो देश रे प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी ऑटोमेटिकली कमिबो जदि गोटे परिवार रे गोटे पिलाटी कोन रहउची ना पॉवर्टी दारिद्र्य रा कराळ चक्र रे दारिद्र्य रे निराश जंत्रणा रे गति करूची सब बेले न्यूट्रिशन नहीं ता पाखरे पुष्टिसार जातीय खाद्य पिला माने पाउ नांती जा फल से माने इलिटरेट शिक्षा पाई पारु नांती सो पुअर सैनिटरी कंडीशंस ऑटोमेटिकली वायलेंस वृद्धि होई थाए क्राइम बढ़ी थाए सो तापर दैट विल लीड्स टू सिकनेस ऑफ पुअर हेल्थ दैट विल लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन हमपर हबो गोटे देश रे प्रोडक्शन धीरे धीरे कमी जिवो सो सिचुएशन health situation is very mane hazardous conditions in the country
The commonly used health indicators like crude death rate, infant mortality rate, गोटे देश रे भल स्वास्थ्य व्यवस्था प्रचलन अच्छी कि ना नहीं आम जाना कौथु ना डेथ रेट रु मृत्यु हार रु जदि मृत्यु हार उच्च हार रे अच्छी ताले स्वास्थ्य व्यवस्था भल नहीं शिशु मृत्यु हार जदि अधिका अच्छी ताले भल स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं एवं बार्थ रेट जदि अधिका अच्छी ताले भल स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सेक्स रेशियो जदि कमी गला मेल और फीमेल मध्य ताले भल स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं लाइफ एक्सपेक्टेंसी बंचीबार मानदंड ये मध्य निर्धारण करिथाय तेणु एते गुड़िए फैक्टर उपरे निर्भर करछि स्वास्थ्य सो infectious diseases continue to be a major cause of death and disease major cause important cause of the rural areas degraded स्वास्थ्य व्यवस्था पाई infectious disease many of such infectious disease are preventable malnutrition still continue आम देश रे death from famines flood and other natural calamities ये पर्यंत सुधा विभिन्न प्रकार दुर्भिक्ष एवं मरुड़ी एवं आमर बन्या बात्या प्राकृतिक दुर्विपाक मध्य अनेक लोक मृत्युवरण करुछंती स्मॉल पॉक्स लाइक वर्तमान जो कोविड-19 स्प्रेड होउची याकू मध्य ब्रेक करा जाई पारु नाही एवं ए गुडिक सब होउची वैक्सीनेशन प्रोग्राम हैव प्रोवाइडेड सम प्रोटेक्शन ब्रिंगिंग डाउन द प्रेवलेंस ऑफ सर्टेन डिजीज जे भली भाइराल डिजीज जो गुडी आमर स्प्रेड होउची वर्तमान कोविड-19 रे ए गुडा सब हमको सब मेंटेन करबा पई पड़िबो उत्तम स्वास्थ्य पई हेल्थ केयर सर्विसेज विभिन्न प्रकार प्लान समय रे मध्य हमर प्रचलन करा जायतिला लाइक ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान रे थिला मेडिकेयर कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ कलेक्शन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स प्रोटेक्शन ऑफ वाटर सप्लाई एनवायरमेंटल सैनिटेशन कंडक्ट ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम ए गुडी सब विभिन्न योजना रे मध्य हमकु इनक्लूड करा जायतिला जा फल रे उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था करा जिवो तापरे विभिन्न प्रकार प्राइमरी हेल्थ पाई प्रोमोटिव प्रिवेंटिव क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज पर मध्य गुरुत्व दिया जायतिला तापरे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक डिजीज पर मध्य गुरुत्व दिया जायतिला एडेक्वेट सप्लाई ऑफ safe water and basic sanitation promotion of food supply and nutritional services material and child maternal and child health care madhya upare gurutwa diya jaitila family planning services upare gurutwa diya jaitila provision of essential drugs upare madhya gurutwa diya jaitila so विशेष करी family planning upare प्रचार प्रसार पत्र प्रोपागेंडा madhya करा जाउथिला family planning हमें सेदिन डिस्कशन करथिले माने फैमिली प्लानिंग केवल आमर बार्थ रेट कंट्रोल को बुझाई न थाए फैमिली प्लानिंग कहले बेटर पेरेंट्स हेल्दियर चिल्ड्रेन एंड हैप्पियर होम ताको कहा जाए परिवार नियोजन व्यवस्था उत्तम पितामाता उत्तम स्वास्थ्य मध्य रे जेउ परिवार आनंद उल्लास रे गढ़ी थाए ताको कहा जाए परिवार नियोजन व्यवस्था बेटर पेरेंट हेल्दियर चिल्ड्रेन एंड हैप्पियर होम दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ फैमिली प्लानिंग जदि उत्तम पितामाता गोटे परिवार थिबे ताले सेमानकर स्वास्थ्य सचेतनता शिक्षा सचेतनता ऑटोमेटिकली रही थाए जदि उत्तम पितामाता थिबे ताले सेमाने सचेतनता हेबे जे परिवार रे गोटे दुईटी संतान हेले यथेष्ट सेमानकु उत्तम स्वास्थ्य दे परिबे शिक्षा व्यवस्था दे परिबे गोटे से परिवारटी आनंद उल्लास रे गढ़ी तोली से पितामाता तेणु से फैमिली प्लानिंग द ट्रू मीनिंग नॉट टू कंट्रोल द बर्थ रेट परिवार नियोजन केवल माने जन्महार को नियंत्रण कथा को बुझाए नहीं परिवार नियोजन बेटर पेरेंट ऊपर निर्भर करे उत्तम पितामाता जदि थिबे ताल पिला माने हेल्दियर चिल्ड्रेन हो परिबे एवं हैप्पियर होम हो परिबे से घर होची आनंद उल्लास रे गढ़ी तोला हबो तेणु से हेल्थ केयर प्रोग्राम सब आम देश में निया लाइक नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम ये सब विभिन्न प्रकार प्रोग्राम बहुत समय इंप्लीमेंट करा नेशनल मलेरिया एराडिकेशन प्रोग्राम
नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम, केते देख सब प्रोग्राम सब करा जायछि। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ये सब करा जायतिला। तेणु वर्तमान करा जाउछि कोन प्रोग्राम ना कोविड कंट्रोल माने कोरोना वायरस कंट्रोल प्रोग्राम वर्तमान चलछि सारा देश रे। टीकाकरण व्यवस्था, वैक्सीनेशन व्यवस्था, तापर फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। एथरे मेनली हाइलाइटेड द प्रोग्राम इंटीग्रेट्स ऑल इंटरवेंशन ऑफ फर्टिलिटी रेगुलेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, reproductivity health, both men and women. The services provided are client centered, demand driven, high quality and need based. The program envisages upgrading the level of facility by providing various interventions. Attempts are on the improving facilities for like insertion in public health center and involvement of NGO voluntary organization encourage and welcome to create awareness among the people in rural areas about health awareness. Contractual appointment madhya diya jauchi, 24 hours delivery services in PHC CHC manakar madhya pradhan kara jauchi. Referral transport to indigent families and training for people to create awareness among the rural areas. एगुड़ा सब उपरे गुरुत्व दिया जाउछि। आम देश रे वर्तमान हेल्थ केयर उपरे विभिन्न प्रकार स्टेप सब निया जाउछि। नेक्स्ट हमर दिबा देखिबा ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल सैनिटेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। सो उत्तम जल जोगान व्यवस्था ये मध्य अति गुरुत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था रे इनक्लूड करा जाउछि। सो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन are not only the basic necessity of life, but they are also crucial for achieving the goal of health for all. यही उत्तम स्वास्थ्य पाई उत्तम परिमल एवं जल जोगान मधुर जल जोगान व्यवस्था मध्य सहाय्य करिथाय। Not only this, drinking water is perceived as a social right to be provided free of cost by the government rather than a scarce resources that need to be managed locally. ए उत्तम मधुर जल बा भल मधुर जल जोगे दबा होची सरकार मध्य गुरुदायित्व। सो इंपोर्टेंस ऑफ वाटर सैनिटेशन इन रूरल हेल्थ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, लाइक हेल्थ प्रोविजन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सब मध्य सैनिटेशन रूरल हेल्थ इकोनॉमिक डेवलपमेंट उपरे अनेक गुरुत्व प्रदान करता है जे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू द रूरल एरिया। सो लाइक as a result 80% of the disease occur due to poor sanitation conditions. हम रूरल गाँ गंडा अंचल रे आगे माने 80% विभिन्न प्रकार रोग जीवाणु यही केवल माने हमर उत्तम पुअर सैनिटेशन कंडीशंस पाई देखा जाउथिला। अवश्य वर्तमान सरकार सचेतनता गाँ गंडा सहर अंचल ठरू गाँ गंडा अंचल पर्यंत सचेतनता सृष्टि करिबारु ए गुडी धीरे धीरे कमिला। So economic conditions development, the economic of any nation is dependent on health and strong people. गोटे देशर अर्थनीति सुदृढ़ होता है, स्ट्रांग इकोनॉमी होता है जदि से लोक माने स्ट्रांग थिबे मेंटली एंड स्ट्रांग मान इन द सेंस मेंटली एंड फिजिकली मानसिक स्तर रे स्वास्थ्य दृष्टि से माने स्ट्रांग थिबे। इकोनॉमिक ग्रोथ इफ यू आर एबल टू डेवलप ह्यूमन कैपिटल और इट्स इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट। Therefore, the key formula to develop human capital which helps in the economic growth of the country, grow more, eat more, maintain a healthy and a balanced life. अधिका उत्पादन वृद्धि करिबा, आमे भल गुणात्मक बा क्वालिटी फूड आमे कंजप्शन करिबा, maintain a healthy and balanced life. गोटा संतुलन जीवन यापन करिबा हमर होची लक्ष्य। ताले गोटे देशर अर्थनीति डेवलपमेंट हे परिबो। सो एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम मध्य सबु एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, सोजल प्रोग्राम, पॉलिसी रिफॉर्म, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी एगुडिक मध्य सबु हम देशर सबु एगडा सबु प्रचलन करा जायथिला टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम इन विलेज एरिया, टू एक्सीलरेट द कवरेज ऑफ
problems in villages. आधर सब स्ट्रेटजी मध्य निया जाउथिला रोल ऑफ वुमेन इन रूरल वाटर सप्लाई स्कीम रे महिला मानकू इन्वॉल्व करा जाउथिला तापर रोल ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आरडब्ल्यूएस स्कीम रूरल वाटर सप्लाई स्कीम रे पंचायत राज रो बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका थिला जोटा कि सेंसिटाइजिंग पीआरआई पंचायत राज इंस्टीट्यूशन सेंसिटाइज करूथिला थ्रू इफेक्टिव इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी granting them the optimum level of autonomy for effective implementation of individual schemes, training of Panchayat Raj institution functionaries to play the role of a team manager to promote well-directed team for effective coordination to provide maximum water supply in rural areas. ठीक से राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई व्यवस्था करा जायतला ड्यूरिंग 1991 ए गोटे मेन प्रोग्राम थिला आधरे जोटा वाटर सप्लाई करा जाउथिला राजीव गांधी वाटर सप्लाई मिशन रे आधर सपोर्टिव कोन थिला ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सपोर्टिंग एक्टिविटीज ए जो हमर थिला राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन रे ए सब सपोर्टिंग एक्टिविटी सब थिला management information system, monitoring, investing units, monitoring and evaluation, research and development, provision of drinking water in rural school area, एगरा सब हमर राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन ने एगरा सब मध्य इंक्लूड करा जाउथिला जा फल रे ठीक भाव रे जल जोगान सैनिटेशन व्यवस्था करा जाउथिला स्ट्रेटजी विभिन्न प्रकार ऑपरेशनल स्ट्रेटजी मध्य ने जाउथिला तापरे सैनिटेशन इन रूरल इंडिया हाउ डू द डिजीज स्प्रेड किभली गांगडा अंचल रे डिजीज गुडी को स्प्रेड होतला हाउ कैन डिजीज बी प्रिवेंटेड ए सब हमर फोकस करा जाउथिला स्टेटस ऑन सैनिटेशन इन रूरल एरियाज स्ट्रेटजी प्रोग्राम टू इंप्रूव सैनिटेशन ये समस्त सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई ऊपर गुरुत्व दिया जाउथिला तापर हमर थिला नेक्स्ट आइटम आधरे इंक्लूड करा जाउथिला लाइक दी आइटम्स लाइक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से बड़ी गांगडा अंचल रे इलेक्ट्रिफिकेशन पाई सरकार रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पर मध्य गुरुत्व दिया जाउथिला रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम्स कवरेज एंड प्रेजेंट स्टेटस तापर गुरुत्व दिया जाउथिला नेशनल कन्वेंशनल एनर्जी फॉर रूरल एरिया नॉन कन्वेंशनल एनर्जी गांगडा अंचल रे गुरुत्व दिया जाउथिला आ परे मध्य फोकस करा जाउथिला इंटीग्रेटेड रूरल एनर्जी मैनेजमेंट मध्य आ परे फोकस करा जाउथिला गांगडा अंचल रे सो assessing the local energy need and integrating the same with local availability energy resources to meet the local energy demand is the basic objective of any integrated rural energy initiative. So integrated rural energy program should become the nucleus of all the non-conventional energy program like those related with biogas, solar PV lighting, solar PV pumping, solar heating, solar cookers, biomass plants, etc. ये गुड़िक सब मध्य गुरुत्व दिया जाउथिला सोलार एनर्जी उपरे विशेष करी गुरुत्व दिया जाउथिला रूरल कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी ये मध्य इंफ्रास्ट्रक्चर रे गोटे गुरुत्वपूर्ण अंग रूरल एरिया रे ए नेशन सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्रोथ रेट डिपेंड्स ऑन द स्पीडी सेफ एंड इकोनॉमिक एंड efficient transport system in general and road transport system in particular. Road transport hochi communication system plays one of the vital role to grow the economic in our country. Karan world tama jani cho the World Road Research Institute or International Road Research Institute ताको कहा जाए शॉर्ट फॉर्म रे IR इंटरनेशनल रोड रिसर्च IRRI सारा विश्व रे
जापान रे अवस्थित IRRI इंटरनेशनल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन जापान सारा विश्व रे अमेरिका को ब्रिटेन को जर्मन को फ्रांस को इटाली को बा हमर ऑस्ट्रेलिया को कौन सी देश रे नाही इंटरनेशनल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट केवल जापान नहीं अछि जेते प्रकार मॉडलिंग रास्ता रास्ता सेफ्टी रे किभली कंस्ट्रक्शन करा जाय परिबो सब देश मानकरू जापान रु जाई रिसर्च करिकरी आसिकरी निज देश रे कंस्ट्रक्शन वर्क करिथांती हम भारत रे मध्य जेते रास्ता कंस्ट्रक्शन होची इंजीनियर माने सिविल इंजीनियर माने जापान रु ट्रेनिंग नेकरी आसिकरी हम देश रे इंप्लीमेंट बर्तमान चलिटी ड्यूरिंग 1991 परे परे जो ग्लोबलाइजेशन हैला तापरे रास्ता घाट संप्रसारण पई विभिन्न प्रकार व्यवस्था करा गला कारण अर्बन एरिया टू कम्युनिकेट कनेक्टिविटी रोड जदि ग्राम पंचायत पंत रहिबो ताले देश डेवलपमेंट हे परिबो सेति पई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY अछि प्रोग्राम प्लानिंग सिलेक्शन ऑफ रोड्स तापरे construction of a rural road is not a new phenomenon in India. Rural roads were seen as a mean to economic growth and revenue official to reach the people for collecting land revenue rather than a means of benefit for the community. केवल रेवेन्यू अफसर माने आरआई माने जाईकरी रेवेन्यू कलेक्शन करबा पई रास्ता कनेक्शन न थाए बट फॉर द कम्युनिटी बेनिफिट ओवरऑल बेनिफिट इज हाईली एसेंशियल for the connectivity road depends on the connectivity road. However, the construction of a village road was included under the minimum needs program MNP program जोटा हेतला तादरे village construction road को include करा देतला first time during 1974 to 79 which envisaged providing connectivity to population groups about 1500 persons. The government of India resolved to provide total rural connectivity eventually culminated in the Pradhan Mantri Grama Sadak Yojana with the target of connectivity every rural habitation that has a population of more than 1000 हजारରୁ ऊर्ध्व लोक संख्या थिबा अंचल कनेक्टिविटी कंपल्सरी करा जायतिला. So in this program further the government of India initiated a number of programs such as NREP program, RLEG program, Johar Rojogar Yojana program, Innovative JROE Yojana program, तापरे होची इन द एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम ये सबु थिरे हमर नाबार्ड इन्वॉल्वमेंट नेशनल बैंक फॉर रूरल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक आदर इन्वॉल्वमेंट रहिकरी फंड सैंक्शन करथला जा फल रे रोड सब अर्बन एरिया रु गांगना अंचल को कनेक्टिविटी दिया जाउथिला. सो डिस्ट्रिक्ट रूरल रोड प्लान्स मास्टर प्लान was prepared at the district level. The district rural roads plan would indicate the existing road network system in the district and also clearly identify the proposed roads for providing connectivity to unconnected habitations in an economic and different manner in terms of cost and utility, so that particularly the farmers will and the village producer will become gainer because what they will produce in the agricultural field that previously they sold it at with low price by which the farmers are become so loser. So in this connection, because due to insufficient road communication, they are unable to supply the surplus food grains or vegetables from rural area to urban areas where there is deficit. And in this connection, if government decided if the connectivity road will be prevailed from urban area to rural area, so that the surplus food grains that is produced by the farmers in the rural area, and they will immediately supply to the urban area where there is deficit. और जो अंचल रे नियंटिया खाद्य शस्य एवं विभिन्न प्रकार वेजिटेबल्स अभाव देखा जाउची से अंचल को ए जो बळका अंचल रो गां गंडा अंचल आनी की सप्लाई करबा. एतद व्यतीत आउ कोन ए सब प्रोग्राम रे कनेक्टिविटी रोड फ्रॉम अर्बन एरिया टू रूरल एरिया because that to produce
the raw materials that is produced in the rural area that can be supplied to the semi-urban area or urban area for the raw material are issued for the industrialization in urban area, or that raw material can be used in village cottage industry and the output may be supplied to elsewhere where it is highly or heavily demanded, that by which the farmers in rural area will automatically benefited if there will be a suitable connectivity road from the urban area to rural area. The farmers will be benefited, the village people will be gainer, and the family members per capita income will automatically increase, by which that will have a very good impact to hike the national income. समग्र जातीय देशीय जातीय स्तर रे इनकम मध्य बढ़िबो। सेतिपई आमर प्रत्येक देश रे ट्रांसपोर्ट होची बेसी गुरुत्वपूर्ण भूमिका। वर्तमान सरकार देख जुआडे देखिबो सबुआडे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जोगै दउछन्ती, सबुआडे रोड ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन चालिछि। सो इंस्ट्रक्शन आसी गलानी। I remain here, mark a full stop in my counseling part today, and asanta kali I will close the entire block in my counseling. So good night to all learners. Good night to all learners again. Good night, sir. Thank you. सोई पड़लनी लर्नर्स माने सोई पड़लनी की सुशांत ना सर। हेलो सुशांत। हाँ सर। सुशांत मन दे सुनछ त? हाँ सर, आज बढ़िया लगला सर। हाँ जेति की सुनो जेति की मन बा सुनी था जानी था गोटा अवेयरनेस क्रिएट हो हेल जे एआई सब्जेक्ट अछि एया पाठ अछि एया सब्जेक्ट बा भीतर प्लेटफॉर्म एया एआई हमकु लिखबा पड़िबो। आ भीतर प्राय लॉन्ग क्वेश्चन आसे हला विभिन्न प्रकार, विशेष कर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 86 के पढ़ी देबो सेटा प्राय त आसे परीक्षा रे। ओके थैंक यू सर। सो गुड नाइट, थैंक यू टू ऑल, गुड नाइट टू ऑल। सर हेलो ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ସବୁ ମନ ରହିଲା ତ? ହଁ ସୁଶାନ୍ତ କଥା ତମେ ତମର ମଝିରେ ପଳଉଛ ବ୍ରଦର